Very good morning to all of you and welcome to the third video of chapter number 10, that is employment and unemployment. We were studying this chapter yesterday also, and yesterday we have talked or discussed about the percentage of the workers, casual workers, hired workers, the workers those who are into the rural areas, into the urban areas, their percentage, male, female workers in the urban and the rural areas. So a raw data we have discussed yesterday into our class regarding this chapter. I hope it has been clear. Now today we are going to discuss about the jobless growth and informalization of the workers. Now what is this jobless growth and informalization of the workers? We are going to discuss it now. See, jobless growth. Jobless growth means growth without having a job. जब हमारे पास में जॉब नहीं होती है पर फिर भी हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, तो उसको हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं. आई होप इट इज बीन क्लियर. वो ग्रोथ, that growth in which the economy is increasing, the GDP is increasing. Okay, we will be saying yes, it is a very big economy, it is a developing economy is developing, trends are being such that it is showing that the economy is into a growth state. But then also the unemployment problem is one of the drastic problem which is there into that country, and that type of growth, that type of economic growth is known as jobless growth. I hope it is being clear. तो now jobless growth को अगर हम लोग we are going to discuss in the terms of definition, तो हम कैसे इसको discuss करेंगे? देखिए, jobless growth it is a situation where the level of output into the economy, जब output level जो है economy का into the output level into the economy tends to rise तो हो रहा है, it is rising, it is tending to rise, but the innovation technology without the satisfactory level of output. Now you see क्या होता है कि हमने अब पहले भी पढ़ा था कि there are two techniques by which the production is being done into the country. एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बारे में पढ़ा था और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में पढ़ा था. अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट देती है लेबर्स को, एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को. और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है, विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, वी आर इंक्रीजिंग द आउटपुट लेवल. सो जॉबलेस ग्रोथ में क्या हो रहा है? द आउटपुट लेवल इज इंक्रीजिंग, द लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग इन टू द कंट्री, द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बट द लेबर्स, द वर्कर्स, they are not getting the job because their job has been replaced by this technology. And this type of growth is a very drastic situation for a country to think about, because without job many of the unemployed people will be there into the country and they will be serving as a burden on the country's economy. I hope this will lead to many crimes, many social disorders and many other problems which the country has to face with this type of jobless growth. Growth is there but jobs are not there with the country. This is exactly happening here with us in India also. The GDP is increasing, it is showing the trend to rise, but the workers' position is being taken by the technology. Now अब what this situation, this type of jobless growth ये क्या देती है, ये क्या ऑफर करती है इकोनॉमी को? It gives rise to chronic unemployment. ये जो है ये chronic unemployment को rise देती है. Chronic unemployment means a very severe unemployment, a very severe conditions due to which lots of people are unemployed and they are under the poverty line, which are giving a very serious
and an alarming situation for a nation's economy. So in order to save the economy from this type of situation, not only with the technology, the growth of jobs should also be there. The people should be given jobs also, so that they can earn their living and they should not go under the chronic unemployment position or chronic poverty position. So now one question is arising in the mind about this jobless growth, and what is that question which is arising in my mind? The question is why we should rely only on more technology and less on employment. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग रिलाय कर रहे हैं किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के ऊपर. वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट. व्हाई इज इट्स हैपनिंग? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में. भाई जब ये दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट है तो हम लोग सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्यों रिलाय कर रहे हैं? हम जॉब्स के ऊपर या लेबर्स के ऊपर क्यों नहीं रिलाय कर रहे? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये जो जॉबलेस ग्रोथ जो है ये क्या है कि एक कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन के. कैसे? देखिए क्या होता है जब ग्लोबलाइजेशन होती है. देखिए अब ये हम लोग कह रहे हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंसेस है. इट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. कि जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, जो ये MNCs हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या ला रही है? अपने साथ में है हाई कैपिटल ला रही है. बिग बिग कैपिटल्स दे आर ब्रिंगिंग. उनके पास कैपिटल बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा है. दे आर कमिंग फ्रॉम द एडवांस कंट्रीज ऑफ द नेशन, एंड ड्यू टू विच when they are coming from the advanced country, so what is happening? They are having the innovative techniques. They need the skilled labor. They need a professional to operate these technology, and due to which the unskilled or a little literate people are not getting jobs into these companies. The person or the workers who are able to speak the international language, they are getting the jobs in that. The person who is having the skilled knowledge, they are entering into these jobs, and the other people are remaining unemployed, and due to which this jobless growth is increasing day by day. Now what happened? They are very much these companies are having a specialization in how to increase their growth, how to increase their specialization in each and every field. So they need a specialized workers, and due to which the unemployment of the regular workers are there. Okay, and high technology, they are investing capital, they are increasing the GDP, they are increasing the tax rate to the government, they are giving taxes, and due to which the common people are suffering from unemployment. So jobless growth, it is a growth without the growth in the jobs, opportunities into the country. Only into the GDP the growth is there. I hope it is being clear कि jobless growth क्या होती है. Now हम बात करते हैं informalization of the workers. ये casualization and informalization of the workers क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं casualization. कैजुअल वर्कर्स, इसकी हमने पहले भी बात की थी कि जिनको कभी कभार काम मिलता है. तो कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कर्स मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन. सी वी आर हियर स्टडिंग द इकोनॉमिक सिचुएशंस. हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज इट? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स इज इंक्रीजिंग, टेंड्स टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि कैजुअल वर्कर्स ये होते हैं जिनके पास में कभी तो काम होता है और कभी काम नहीं होता. अब ये कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैजुअलाइजेशन मतलब कि वो सिचुएशन, वो इकोनॉमिक सिचुएशंस इन विच द कैजुअल वर्कर्स का जो परसेंटेज है, द वर्कर्स विच आर वर्किंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उनका जो परसेंटेज है वो तो बढ़ता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जितनी भी पूरी वर्कफोर्स है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 50% पीपल, 50% ऑफ द पॉपुलेशन हियर इन इंडिया आर वर्किंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन टू द GDP,
and out of that 50%, the percentage of the casual workers working into the informal sectors are increasing day by day, and that is called casualization. This is also one of the big problem of the economy, one of the big problems which every economy is facing nowadays due to outsourcing work, due to the increase in the outsourcing activities of these MNCs. I hope it is being clear. Now, the second is informalization of the workers. See, in the previous class, in 10th, what we have studied that what is informalization. ठीक है, informal sector क्या होता है और formal sector क्या होता है, we have studied into our economy when we were in 10th class. I hope it is sectors of economy. Formal sectors और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो फॉर्मल जो सेक्टर्स होता है वो फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स वर्क विच इज डन इनटू द ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये, जैसे जहाँ पर सारी जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस पीएफ एवरीथिंग आर देयर, limited working hours are there, limited permanent salaries, permanentation of the workers are there. ठीक है, social security is there, that yes you will be getting the provident fund, you will be getting the pensions and all such things are there in this in this formal workers. ठीक है, you are having your trade unions also in this organized sector, and these trade unions are what they are doing, they are raising their voice for these workers. I hope it is being clear. Now when we go to informal sector, जब हम लोग informal sector के ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, these are the unorganized sector. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, एनी टाइम द पर्सन कैन टेल यू दैट गो, no jobs for you, now I don't need you. So this is called informalization of no job security, no PF, no fixed salary, no salary according to the government rules. So these are the informalization of or unorganized sector of the economy. So now the question is that कि what is informalization? Now informalization से हम लोग क्या समझते हैं? Informalization means it is that economic problem or situation into the economy in which the number of informal workers are more than the formal sector. So now what is this definition saying? The workforce is defined as a situation. See, all the thing in which we are studying like jobless growth की बात करते हैं या कैजुअलाइजेशन की बात करते हैं, चाहे इनफॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, ये सब क्या है, एक सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी है, एक ऐसी सिचुएशन की बात हम यहाँ करते हैं. तो इट इज अ सिचुएशन इन विच द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसकी बात करते हैं, वो परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड दैट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है वो टेंड टू राइज, वो इंक्रीज होता जा रहा है. लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम करते हुए दिखते हैं एज कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट दैट इज द jobless growth, informalization and casualization is being clear to you. In the next video we will be coming up with a new topic of this chapter related to this chapter only, and for any queries regarding the concept or the regarding anything into the chapter, please do talk to me, call me up so that I can solve your problems or queries which you are having in this. So please see this video very carefully.